Assalamualaikum, welcome back to my channel. After a long time I'm creating a video again, and today video is a beginning of EC2 series where I will covering the EC2 section in details. In my previous or last video I talk about the cloud computing and essential Linux command for the cloud and DevOps engineer. If you missed it, the link is in the description. Watch it first as it is important before diving into the AWS services. So without wasting your time, let's get started to learn about the AWS services. So for learning AWS services, we will start from EC2 instances. So what is an EC2? EC2 stands for Elastic Compute Cloud. It is one of the most popular service offered by the AWS. AWS ने EC2 मतलब AWS EC2 को ऑफर करता है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सर्विस है एंड इट्स कम अंडर द कंप्यूट कैटेगरी. मतलब ये कंप्यूट कैटेगरी के अंडर आती है, मतलब इसकी मेन फंक्शनैलिटी कंप्यूट के रिलेटेड है. EC2 इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. दिस मीन्स यू कैन यूज इट और रन द वर्चुअल मशीन जस्ट लाइक अ फिजिकल कंप्यूटर्स बट इन ए क्लाउड. सो EC2 क्या है? EC2 बेसिकली एक वर्चुअल सर्वर है. मीन्स एक वर्चुअल सर्वर क्या होता है? एक जस्ट काइंड ऑफ मशीन होती है और उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं फिजिकल सर्वर की तरह, फिजिकल मशीन की तरह. बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि वो सर्वर हम क्लाउड पे एक्सेस कर सकते हैं. जैसे फिजिकल सर्वर का एक्सेस होता है और हम फिजिकली एक्सेस कर पाते हैं, बट ये जो EC2 इंस्टेंस पे जो भी हम मशीन बनाएंगे उसको वर्चुअली हम एक्सेस करते हैं. ओके. EC2 is responsible for storing the data in a virtual drive which is an EBS volume. ये EBS वॉल्यूम में हम सारा कुछ डेटा स्टोर करते हैं जो कि हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे. एंड लॉन्चिंग अ वर्चुअल मशीन, एज आई टोल्ड यू कि हम EC2 पर एक वर्चुअल मशीन लॉन्च कर सकते हैं. उसके की कंपोनेंट्स होते हैं लोड बैलेंसर्स और द स्केलिंग मीन्स ऑटो स्केलिंग एक्सेट्रा. वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे. और यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स EC2 अलाउ यू टू रन द ऐप, वेबसाइट और एनी वर्कलोड ऑन वर्चुअल सर्वर्स. मीन्स हम EC2 पर मतलब कोई भी ऐप को होस्ट कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं और कोई भी एप्लीकेशंस को EC2 पर होस्ट करके हम उसको एक्सेसिबल बना सकते हैं यूजर्स के लिए. सो हम बात करते हैं EC2 इंस्टेंस में ऐसे मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड होती है. द थिंक ऑफ एन EC2 इंस्टेंस लाइक अ वर्चुअल कंप्यूटर. तो इस तरह से सोचो कि EC2 इंस्टेंस एक वर्चुअल कंप्यूटर है और जो फिजिकल सर्वर होता है, जो मशीन होती है, उसके बेसिस पे सोचो. इट कम्स विद अ सर्वर कंपोनेंट्स. सही है. अगर हम फिजिकल मशीन भी हमारे पास, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंडर आती है. लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम आती है, लाइक और CPU आता है, मेमोरी आता है. सेम चीज़ें हैं, सेम टू सेम चीज़ें जब हम EC2 इंस्टेंस बनाते हैं या लाइक वर्चुअल सर्वर बनाते हैं तो ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं. लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूट पावर, स्टोरेज स्पेस एक्सेट्रा. So the EC2 offers the operating systems like Linux, Windows, Mac OS, etc. and the compute power like CPU also, storage also for the storage. Okay, then the choose how much storage your instance needed. In the CPU we can choose this is a processing power. Okay, CPU is a processing power of your virtual machine. तो choose based on workload. आपके वर्कलोड के बेसिस पे आप CPU को चूज कर सकते हो. सेम चीज़ फॉर द स्टोरेज स्पेस ऑल्सो. और जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि EBS वॉल्यूम होता है, EBS स्टोरेज होता है जो कि हम अटैच करते हैं EC2 इंस्टेंस को. और एक चीज़ होती है इंस्टेंस स्टोर. तो EBS एंड इंस्टेंस स्टोर, दैट द डिफरेंस बिटवीन टू स्टोरेज आई विल एक्सप्लेन लेटर. और उसमें हम चीज़ें को अभी मशीन को मतलब सिक्योर करने के लिए हम फायरवॉल्स लगाते हैं विच इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज अ सिक्योरिटी ग्रुप. उसके अलावा हम एक बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट लिखते हैं. बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट इज नथिंग बट a user data. Okay, the user data is what? User data is also called as a bootstrapping. It means running a commands automatically when EC2 instance start फॉर द फर्स्ट टाइम. मतलब जब हम EC2 इंस्टेंस बनाते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन पूछता है फॉर अ यूजर डेटा. वहाँ पे हमें बस एग्जीक्यूट ऑफ सेट ऑफ कमांड्स करना होता है और वो कमांड्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं जब EC2 इंस्टेंस फर्स्ट टाइम लॉन्च होता है, फर्स्ट टाइम जब बनता है. इट इज़ अ वेरी यूजफुल सेटिंग अप द इंस्टेंस विदाउट अ मैनुअल एफर्ट्स. जिसकी वजह से हमें ये चीज़ होती है कि जो चीज़ें नेसेसरी है, मतलब जो सॉफ्टवेयर हमें नेसेसरी है, जो पैकेजेस नेसेसरी है पर्टिकुलर ऐप को रन करने के लिए ऑन EC2, दैट वी कैन ईजीली इंस्टॉल विदाउट डूइंग एनी मैनुअल एफर्ट. जस्ट वी हैव टू
paste this some commands on the user data, or we just have to pass this some script on a user data. Okay, it's very useful or helpful for the automated task like installing updates, installing software, download the code and config file from internet, and setting up the environment variables also, or nothing else you can think of during a launch. Okay, like that. So this is one thing which we get from the EC2 instance at a time of launching, which is called as the bootstrapping. Here you can see the EC2 instance type example, like instance there are many types of EC2 instance like a T2 micro, T2x large, CFID 4x large, etc. So T2 micro is coming for the free tier. When you are creating a EC2 instance first time for the free tier account, that time you get a T2 micro instances at a free tier, means you don't have to pay anything for that. But for a 1 month only, and the 30 GB of storage get free for the first time of launching a EC2 instance on a free tier account. Okay, so kind of here you can see in this image there is a multiple types of instances come with a multiple different configurations like CPU, memory, storage, networking performance, and the EBS bandwidth. Okay, so we will see the demo how you can launch the EC2 instance. Okay, then let's get start. To start our EC2 instance, first EC2 instance launching, so click on EC2. Then here you can see the dashboard. Here you can see the region, in which region you are launching the EC2 instance. Go to the dashboard. Then here you can see the dashboard, instance running, then auto scaling group, dedicated host instance. In an instance running, you can see the how much instance is running. As of now, no instance is running, so we have to create that instance. Click on launch instance. Then okay, then it is in some one message. Then give the name for the instance. Then select the OS, for which OS you want to create the machine. So in browser more AMIs, you can see the all AMIs also. The AMI we will discuss in next lecture. So here you can see the which AMI you want to launch the instance for the free tier 24 means 24 version or something. Then you just have to select the type. For the T2 micro is free for the free tier account. So like that, if you want a more specific configuration of instance type, you can check. Here we can take a T3 micro for the better performance, because the T2 is an old generation. So we can take the T3 T2. Then T2 micro is a free tier but is an old. Then we will go with T3, but before that we can compare the instance type also. See, you can see here many different instance type: T3 nano, T3 micro, T3 small, etc. Like T3 micro, we are selecting T3 micro and select the instance type. Then we have to select the key for means access the EC2 instance. So we are creating the key, name is key demo key. Here you can create a PEM file or PPK file. If you are using the Windows 11 or 10, then you can go with a PPK. If you are using the Windows less than the Windows 10 or 11, you can choose a PEM and then you can convert it to a PPK if you are accessing the EC2 instance via PuTTY. If you are not understanding, I will cover this in next section. Now here we can select the networking part, allowing SSH and HTTPS and HTTP. Here we are configuring the storage. Here you can see the free tier eligible customer can get a 30 GB for this account. If we are creating a first EC2 instances in a first free tier account, that time only 30 GB of EBS get free. Here in an advanced option you can check the multiple options also. Then the delete termination by default is an yes, means if you are deleting the EC2 instance, your storage is also get deleted.
Okay, in advanced setting you can check with IAM instances, means IAM role which are assigning to the EC2 instance. That part we will see in next lecture. Here you can assign the, what I can explain you, that part, bootstrapping part, and in that section you can assign the script, or you can just paste that script for the bootstrapping. Okay, now let's then click on launch instances. Now your instances get launched. Just wait, refresh it to check. See, here the demo server is on running, but in status is initializing. Once it's get initialized, it will showing 3x3 status check. Okay, just waiting for some time. Here you can see the all informations about that instance, like instance ID, public key, private key, not public key, private key, public IP and private IP, my bad, sorry. Then here you can also check the AMI ID, AMI name, that I will explain what is an AMI next. So simply I give the overview. AMI is nothing but you can see it's nothing but a one kind of box where all configuration is present. Is not so in AMI, what we can say, in AMI the all configurations already present. So whenever you launch any instances using that particular AMI, you get all configurations by default. For example, for the Ubuntu machine we are launching, so the requirement for the Ubuntu machine is already present in that AMI. So AMI is nothing but the one kind of box where all configurations are already present. So you get an idea, then you can check. Firstly refresh it and check it's initialized or not. Status is not initialized yet. Then wait. The status is 3x3 check pass. So your demo server is get launched. So using these steps we can launch our EC2 instances. Okay, I hope you like our lecture, the first series, means first lecture about the EC2 instance series. In the next lecture I will show you how to stop, start and the terminate, and hope you like our lecture. If you like that, share with the beginners who want to learn the AWS. Thank you so much. Assalamu alaikum again.